हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश बाल भारती का 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक उसके वार्मिंग अप्स एंड इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से, वाज दिस रियली ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीजन? आंसर, नो, दिस रियली वाज नॉट ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीजन। सेकंड है, व्हाट ही ओनली ट्राइंग टू गिव अ मैसेज इन light-hearted but effective way. Answer, yes, he was. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर समवन एल्स स्पीकिंग टू यू एंग्रीली विदाउट थिंकिंग? व्हाट डिड यू डू ऑन दैट ओकेशंस? डिड यू आल्सो स्पीक एंग्रीली? आंसर, yes, I remember many occasions when my sister, who is in standard 10, spoke to me angrily without thinking. बाकी का आंसर आप यहाँ से कॉपी कर कर लिख लीजिए। इंग्लिश वर्कशॉप के हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेम वर्ड कैन बी यूज एज अ नाउन इन सम सेंटेंस एंड एज अ वर्ब इन अदर्स, फॉर एग्जांपल। तो फर्स्ट का दिया हुआ है, फर्स्ट क्या है? मेनी आर एम्प्टी रिमार्क्स। तो यहाँ पर उसके आंसर भी दिए हुए, चेंजेस, शो, थ्रो, रिटर्न और बेनिफिट, वो नाउन और वर्ब। आप यहाँ से डायरेक्टली लिख लीजिए। सेकेंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग आंसर। First, your ears are like funnel because they are open all the time and there is no door with which you can close them. Second, the two rows of teeth are like a fence because if we wish to speak, our words have to pierce to them. Third, the two leaves are like two fence because a word is spoken, it has to pass through it. For harsh words are like scattered by bits of paper carried away by the wind because once you have spoken them loud it is very difficult to take them back. Third question say, write a brief summary of the story of the young man and his spiritual teacher, making the young man the narrator. You may begin it given below. I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had now continued. Answer, I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had spoken very harshly to my friends and hurt him. I wanted to make amends. My spiritual teacher told me to write down on a sheet of paper all the harsh things I had said. बाकी का आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।